You might not know this, but a Gurudwara in Mumbai honors Imam Hussain every Muharram. Overlooking the Arabian Sea in Andheri is Versova Sachkhand Darbar Gurudwara Sahib. As soon as Muharram begins, black banners remembering the martyrdom of Imam Hussain, his family and companions are hung up at the Gurudwara entrance. On Ashura, when the Julus by the Shia community affiliated to Mehfil-e-Sani-e-Zehra passes by the Gurudwara, the mourners are greeted by members of the Sikh community as they pay homage to the Imam. Sabils serving sharbat and water are also especially set up on Ashura Day. Urvinder Singh Madan came to Mumbai from Delhi in the 80s, but he claims the Gurudwara is one of the oldest ones in Maharashtra, dating back to 1857 when it was still a British military barrack. बैनर जो लगाते हैं मुहर्रम में, वो मैंने सुना है कि मुहर्रम में जो शहादत दी है उन्होंने, बहुत जुल्म के अगेंस्ट लड़े हैं। वो इस जुल्म के अगेंस्ट में लड़ने के लिए उन्होंने जो अपने पूरा परिवार को, पूरे खानदान को 70 से 80 आदमी ने शहादत दी है। बहुत बड़े बड़े उनके ऊपर जुल्म हुए हैं। वो जुल्म से निकालने के लिए उन्होंने लोगों को एक सबक दिया है, एक शिक्षा दी है कि डरना नहीं, मैं शहादत दे रहा हूँ खाली ये कौम बचाने के लिए। कोई भी जुल्म वाला करने वाला आएगा, उसका जुल्म सहना नहीं, डरना नहीं और अपनी रक्षा खुद करनी है। इसके लिए मैं पूरा घर परिवार बलिदान करके शहादत दे के जा रहा हूँ, एक सबक दे रहा हूँ। मुहर्रम में ये बैनर या ये पोस्टर या खाना लगाया है उनके लिए कि हम लोगों को सिखा सकें। जो आके देखेंगे, खाना खाएंगे तो पूछेंगे मुहर्रम क्या है, तो उनको पता लगेगा कि जुल्म के अगेंस्ट में जिन्होंने शहादत दी है उसके लिए मुहर्रम दिवस बना रहे हैं। And not just on Ashura, similar banners every year commemorate the martyrdom of Imam Ali during the month of Ramazan. The Sikh community has a long history of serving food to one and all, irrespective of faith, class, and caste. A year-round 24/7 Langar Seva that is incomparable to any other in the whole world. On a regular day, this Gurudwara alone serves food to about 3,000 people. And the organizers say they take extra care of security guards and watchmen of the various buildings in Versova, Andheri, Lokhandwala areas. A selfless act not many even think about. Every day, 200 kilograms of atta, 100 kilograms of rice, 150 kilograms of sabzi, and 50 kilograms each of dal and kheer, and 5 kilograms of kara prasad are cooked here. People don't have to worry about hunger as this place of worship has taken care of it for them for decades now. The beauty of this selfless act by the Sikh community rises above religion. It cements the fact that above all lies humanity and the service of one another as a way to serve God.